येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीवन टुगेदर प्लीज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। So, decisions determine destiny, and when it comes to make a particular decision, there is so much confusion. हम में से कौन कौन फील करते हैं कि सच में कोई भी डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्टी आती है, especially when there are multiple options? Everyone, yes. Prajay Prabhu is already taking some decision, I think. Yes. So छोटा छोटा डिसीजन भी लेने के लिए इतना सोचना पड़ता है। एंड आजकल तो मतलब फॉर एवरीथिंग वी थिंक सो मच। आज कौन से कपड़े पहन के कॉलेज जाऊं? हाँ। एंड अगर बाहर कहीं खाने गए तो व्हाट शुड आई ईट, व्हाट शुड आई नॉट ईट। हाँ। एंड बचपन में मुझे याद है जब छोटे बच्चे थे तो रिश्तेदार आते थे, 10 रुपए दे के जाते थे। एंड देन दुकान पे जाके आधे घंटे तक तो ऐसे खड़े होकर सोचते रहते। दुकान वाला बोलता था क्या चाहिए, तो पहले सोचूंगा अच्छे से कि बिस्किट लूं कि कुरकुरे में इन्वेस्ट करूं कि ये लूं कि वो लूं, लाइक दैट, बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑप्शंस एंड आई हैव लिमिटेड बैलेंस। 10 रुपए ही है मेरे पास। तो क्या खाऊंगा जिससे बेस्ट मजा ले सकूं? तो 5 रुपए का कुरकुरे और 5 रुपए का उस समय आता था हैप्पी हैप्पी। आप में से किसने हैप्पी हैप्पी खाया? सबने ऑलमोस्ट। ओके। अभी भी आता है नहीं? सो हैप्पी हैप्पी खा के आई यूज टू फील हैप्पी। थोड़ा मसालेदार कुछ हो जाए एंड देन उसके बाद मीठा चॉकलेट बिस्किट। सो आई यूज टू फील हैप्पी। सो लाइक दैट वी नीड टू मेक मैनी डिसीजंस इन आवर लाइफ। तीन प्रोमिनेंट डिसीजन जो हमको लेने होते हैं लाइफ में, कौन कौन से? करियर, यस। एंड शादी का। सही बात है, वाह। अपूर्व आनंद प्रो इज वेरी इंटेलिजेंट। पहला, डिग्री, है ना? वो तो हम लोगों ने ले लिया ऑलरेडी डिसीजन। हाँ, कौन सी डिग्री करनी है? 11th में ये डिसीजन लेना होता है हमको जनरली। अब तो और शायद पहले लेने लगे होंगे। 8वीं में ही आजकल भेज देते हैं बच्चों को कोटा और 6वीं से। ओह भगवान। आई हर्ड दैट फ्रॉम 8th क्लास स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर जेई और नीट, नाउ दे आर सेइंग फ्रॉम 6th। सो डिग्री इज वन ऑफ द थिंग। सेकंड इज नौकरी। आफ्टर डिग्री we choose नौकरी, and third one, as Apurva Anand Prabhu said, छोकरी। डिग्री, नौकरी एंड छोकरी, ये तीन डिसीजन जो है लाइफ के बहुत प्रोमिनेंट है। एक भी गलत हुआ, गड़बड़ हुआ, होल लाइफ विल बिकम मिजरेबल, स्पेशली द थर्ड वन। बाकी दो ऊपर नीचे हैं तो भी चल जाएगा, पर द थर्ड वन इफ इट इज नॉट राइट, ओ व्हाट कैन बी सेड अबाउट दैट? यू नो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। सुना है, देखा है, उससे बता रहा हूँ। So these three are very prominent decision generally we people need to take in their life, and we all have taken one worst decision and one best decision. हम सबने एक वर्स्ट डिसीजन लिया है अभी तक और एक बेस्ट डिसीजन लिया है। कौन बताएगा वर्स्ट कौन सा है और बेस्ट कौन सा है? यू कैन टेल। विक्रम को वर्स्ट इज सोचना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे वर्स्ट डिसीजन। बेस्ट के लिए, हाँ,
टेंथ के बाद मैंने थी साइंस में जाना। तो घर वाले बोलते थे कि यहाँ पे ही पढ़ लो ऐसा, आसपास आर्ट्स का कॉलेज होता है, इंग्लिश वाला वो एक साल रह लो। देन आफ्टर एमएससी मतलब वहाँ पे ऑप्शन ऐसे घर पे बैठे तो ऑप्शन कभी जॉब वगैरह करने की, तो घर वाले बोलते सीधा वर्क कर लो। तो मैंने एक चीज भी करना तो वो वाला एक लगे रहे कि एक साल वहाँ पे गया, 1.5 साल एग्जामिनेशन वगैरह सब करना। तो वो वाला तो वहाँ पे ऑप्शन था कि जॉब पे जाने के, लेकिन घर वाले बोलते थे कि ये वेट करो फिर जॉब जॉब कर। कर लो। अच्छा भी नहीं PhD तो ये बेस्ट डिसीजन रहा आपका। ओके, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर वर्स्ट और बेस्ट? मेरे अकॉर्डिंग मतलब ज्यादातर लोगों की लाइफ में वर्क डिसीजन नहीं होते हैं, वो सिर्फ वो पर्टिकुलर टाइम पे लग रहा होता है, आगे जाकर जो भी योजना रहती होगा वो डिसीजन सही लगने लगती है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो वर्क डिसीजन होता ही नहीं। यस, एक बार एक व्यक्ति था, वो बोल रहा था भगवान से, भगवान change this situation, why you send this obstacle in my life, change it. And भगवान नीचे देख के बोले, I sent this obstacle to change you. हम नहीं बदलना चाहते, हम बस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। यस, दैट इज वेरी नाइस व्यू जो शुभम प्रभु ने रखा। दैट मेनी टाइम्स हमको लगता है ये वर्स्ट है, बट आगे चल के पता चलता है कि ये तो बेस्ट निकल गया, या अच्छा डिसीजन था। एनीथिंग एल्स एनीवन वुड लाइक टू शेयर? मिलन प्रभु? यस, वर्स्ट और बेस्ट? सॉरी? taking the worst decision and make it best. हाँ, इवन वर्स्ट डिसीजन ले लिया, उसके बाद भी बेस्ट बना दिया। तालियां हो। हाँ भाई, डिपेंड्स। it depends, so yeah. डिपेंड्स, मिलन प्रभु सॉल्व कर रहे हैं या लोग कोई और, हाँ डिपेंड्स करता है मिलन प्रभु फेस कर रहे हैं उसे नहीं करता। हाँ, यस, बिकॉज देयर आर मेनी वर्स्ट डिसीजन जिनको बेस्ट बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। या इफ यू इन आवर यूथ एज, अगर हम गलत रास्ते में चले गए, इफ वी गेट इनटू रिलेशनशिप, स्पेशली वो थर्ड वाला डिसीजन। यस, उसको बेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार एक व्यक्ति था, उससे पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर बीइंग मिलियनियर, यू नो? बोले, अच्छा, सो माय वाइफ। सो अगर तुम्हारे वाइफ में, तुम्हारे लाइफ में नहीं आती, तो आप क्या होते? बोले, बिलियनियर। सो लाइक दैट, कभी कभी you know, चीजें ऐसी हो जाती हैं। सो आर वर्स्ट एंड वन वर्स्ट एंड वन बेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइव्स, एक्चुअली दिस आई एम टॉकिंग होलसम, हम सबके लाइफ की अगर बात करें। सो दी वर्स्ट डिसीजन जो हम सब ने लिया इज फॉरगेटिंग कृष्णा एंड कमिंग टू दिस material world. This is the worst decision we all have taken. and best decision. Hmm? And the best decision is that we all are accepting Krishna again. That is a common thread in all of us. हम सब भगवान को भूल के यहाँ आए। कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, निकट मायाधार झापड़ी अधर। दैट कम्स इन चैतन्य चैतामृत। कृष्ण को भूल के सोल जो है वो भोग वांछा करता है, ही वांट्स टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली, बट एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज दैट ही सफर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड द मटेरियल एनर्जी किक्स इन very badly, very harshly. But no need to worry, because we have accepted Krishna again, so now the life can change. The beautiful thing about Gita is, गीता में ये नहीं बोला, यू डू दिस, यू डू दैट। कृष्णा इज नॉट इंस्ट्रक्टिंग अर्जुना कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करो, ये मत करो। बाकी सारे स्क्रिप्चर्स अगर हम देखते हैं ना, लाइक बाइबल हो गया, कुरान हो गया, देयर आर कमांडमेंट्स, मीन्स देयर आर इंस्ट्रक्शंस, दिस शुड बी डन, thou shall not be done, thou shall be done. And in Quran also we see there are many such, thank you, Hare Krishna, many such commandments are there where it instructs कि ये करना है करके। But in Gita we see Krishna just empowers Arjuna with the right wisdom by which he can himself take the decision. That is the beauty of Gita. In Gita, Krishna is not forcing Arjuna to take a particular decision,
और टू फाइट द वॉर, अगर तुम वॉर नहीं लड़ोगे तो देन मैं जा रहा हूँ चैरियट छोड़ के। मुझे क्यों बुलाया फिर यहाँ पे? हाँ, so no, he is not like that. See, this verse is coming 18.63. It is the ending of Gita. सारी गीता बोलने के बाद कृष्ण is speaking this verse. Please repeat after me. इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया विश्र विश् विम्शेष विम्शेषत् अशेषेण यदिच्छसि तथा कुरु। Thus I have explained to you knowledge is still more confidential. Deliberate on this fully and then do what you wish to do. This is the beauty of Gita. See, I have explained to you knowledge, still more confidential. इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। मैंने गुह्य से भी गुह्य नॉलेज, कॉन्फिडेंशियल से भी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज तुमको बता दिया। नाउ just don't do whatever you want to do. Here Krishna is suggesting first deliberate on this fully. Vimshesh tad asheshena, अच्छे से उस पर विचार करो, अशेषेणा, कुछ भी छोड़ना मत, deliberate completely fully, and then यद इच्छसी तथा करो, do what you wish to do, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। Amazing thing. That is the beauty of Gita. And we see that in Gita, इन द बिगिनिंग ऑफ गीता, अर्जुन जो है वो अपने लाइफ का वर्स्ट डिसीजन लेने जा रहे थे, दैट इज टू नॉट फाइट द वॉर, टू लीव द बैटल, एंड उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते, दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन। एंड देन एट द एंड ऑफ द गीता 45 मिनट के बाद अर्जुन टुक द बेस्ट डिसीजन ऑफ हिज लाइफ। नहीं, fighting for the right cause, but not the fighting was the decision which Arjuna took. We'll see what the decision Arjuna took. So आज हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है, क्या सही डिसीजन है, क्या गलत डिसीजन है। वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे हाउ टू टेक डिसीजन. So today I am going to share whatever I have learned from my seniors, superiors, 4 decisions which if we take in our lives. अगर ये 4 डिसीजन अब अगर हम हमारे लाइफ में लेते हैं तो उसके बाद हम जो भी डिसीजन लेंगे, वॉट एवर इट मे बी, इट इज गोइंग टू बी परफेक्ट. हाउ अमेजिंग. If we take just these 4 decisions in our life, then any decision which we are going to take in the future, that is going to be perfect without a doubt. Just before taking it, let us consult these 4 things first. Okay, so this is going to come from Gita only. Arjuna took all these 4 decisions, and therefore after that whatever decision he took was perfect. So first decision which we all need to take is this decision to challenge. That is the first decision जो हम सबको अपने लाइफ में लेना है. How it comes in Gita? Here see. Just forget about this mistake. It is not 18.63, it is 1.31. It comes from Bhagavad Gita, first chapter, 31st shloka. Here Arjuna is speaking to Krishna. Nacha shreyo anupashyami hatva swajana mahave na kankche vijayam Krishna nacha rajyam sukhani cha. Here he is saying, I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle. Nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. In this world, why people work so hard? क्यों लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्यों फाइट करते हैं, क्यों इतनी हम पढ़ाई कर रहे हैं? What we want in our life? Satisfaction, happiness, and what else? Money. Yes, money से happiness आता है. Fame. If सही मायने में देखा जाए, 3 वर्ड में अगर उसको कंक्लूड करना है ना, विजय, राज्य एंड सुख. We want success, victory. We want Rajya. Rajya means control. We want to control. To some level, every one of us wants some control in our lives and in others' life.
and then sukha, happiness. Am I right? These are the three things which we all are looking for. This is what is considered as success. इसी को सक्सेस की परिभाषा बोलिए ना। आप अगर विक्टोरियस हो, आप सबसे आगे हो, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंट्रोल है, एंड इफ यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, देन यू आर सक्सेसफुल. Here Arjuna is challenging that definition of success. He is saying, I don't want all of these. ना कांक्षे विजयम कृष्णा ना च राज्यम सुखानी चा. मुझे ना विजय चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए. First and foremost thing which we all need to do in our life is to challenge. Why? Because when a lie, झूठ होता है ना, when a lie is spoken loudly and long enough, then what happens is that, and if a good number of people accept that lie, कुछ एक group of people अगर उस झूठ को accept कर लेते हैं, then it becomes a so-called truth. Yes. Then if that truth, sorry, when a lie is spoken loud enough and long enough, then it becomes a so-called truth. And when a good number of people accept that so-called truth, then it becomes a culture. And then if that culture is being passed from one generation to another generation, it becomes tradition. And then जो भी बच्चा उस ट्रेडिशन में जन्म ले रहा है, उस जनरेशन में आ रहा है, he is going to follow that tradition blindly, which is based on a so-called culture, which came from a so-called truth, which is generated from a lie. That is how it happens in the world. आज से 200 साल पहले इंडिया में आके चिल्ला चिल्ला के एक lie बोला गया, loudly and long enough, then Western culture will make you happy. And by seeing their so-called standard of living, many people accepted it and it became a culture. Then it passed through few generations and it has become a tradition. अभी बच्चा जन्म लेता है, उसको तुरंत ही पैंट शर्ट पहना देते हैं उसको तुरंत ही इंग्लिश सिखाने लगते हैं, इंग्लिश स्कूल्स में भेज देते हैं. उसको अपना जो वैदिक कल्चर है ना उनके माता पिता को पता है ना बच्चे को पता है. धोती कुर्ता इज व्हाट इट इज, एलियन. ये पहन के कैंपस में घूमोगे ना आप, आपको पूरा फोकस एंड अटेंशन मिलेगा. अगर आपको अटेंशन की आवश्यकता है, अगर आपको लग रहा है लोग मुझे कम देखते हैं, इग्नोर करते हैं, बस यू नीड 900 रुपीज. कम टू इंदौर, परचेज वन धोती कुर्ता, देन कम टू कैंपस. हर जगह लोग आपको ऐसे देखेंगे, भाई कहाँ से आ गया ये विचित्र प्राणी. यस. आज से जस्ट 30 साल पहले, नॉट इवन 50-100 साल पहले, जस्ट 30 साल पहले आप कोलकाता की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की फोटो अगर देखेंगे, दैट इज देयर. वहां पे सारे इंडियन स्टूडेंट्स बैठे हैं एंड धोती कुर्ता में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं. दैट वाज आवर कल्चर. हमारे दादाजी लोगों को हमने सबने धोती कुर्ता या पजामा कुर्ता में ही देखा है, वो कभी पैंट शर्ट नहीं पहने होंगे आई थिंक. या बट नाउ इफ यू कैन वियर दैट, देन ईदर यू आर गोइंग टू सम फेस्टिवल और यू आर एलियन. एक बार मैं कॉलेज में गया था, इंदौर की, एंड टू आस्क फॉर द परमिशन फॉर द इंडक्शन प्रोग्राम में सेशन करने के लिए. तो वो टीचर जब देखे, बोले, ए क्या कर रहे हो यहाँ पे. उनको लगा मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ. एंड देन उनका, मैम आई केम हियर फ्रॉम इस्कॉन. ओह सॉरी सो प्लीज कम कम. सो व्हेन आई केम, सो शी इज लाइक, वो बोले हमारे यहाँ कॉलेज में कल्चरल फेस्ट चल रहा है. तो उसमें लगा, मेरे को लगा तुम कोई स्टूडेंट हो कल्चरल फेस्ट में, एंड यू आर वियरिंग दिस कल्चरल कॉस्ट्यूम and participating in one of the acts. So like that, it has become like, very abnormal. So we need to think about it deeply. We need to reflect a little before acting. Yeah, please think. Arjuna was an archer, ना. कोई भी आर्चर होता है जो तीर छोड़ने से पहले क्या करता है, तीर छोड़ने से पहले क्या करता है, पीछे खींचता है ना. हाँ, डोरी को पीछे खींचता है, तीर को पीछे खींचता है. क्यों खींचता है, तीर तो आगे फेंक रहा है. वाई पुलिंग इट. हाँ. यस रजय प्रभु. यस यू कैन आंसर. इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करने के लिए. हाँ, नहीं नहीं तो अगर यहीं कहीं ऐसे छोड़ेगा तो यहीं गिर जाएगा. कहाँ टारगेट को हिट ही नहीं कर पाएगा, है ना.
सो वो पीछे खींचता है क्यों? टू जनरेट द फोर्स so that it can reach the target, it can hit the target, हाँ, it can be focused on the target. So also we need to first think about what we are really looking for in our life. Let us not blindly start chasing our goals. Just imagine, we spent all our lives giving best of our efforts to achieve our goals, and we have achieved our goals, you know, and after achieving it, we realize that वो मेरे लाइफ के गोल नहीं थे, वो किसी और के लाइफ के गोल थे. How much frustrating it would be. Yes, because the society says do this, do that, you know, this is meant for you, this is not meant for you. If we just accept everything and anything blindly, we may end up somewhere where our heart would be just crying, will not be having any satisfaction. And therefore we need to reflect before any decision, and we need to think, where I really want to go. Otherwise, it will not help much. Second decision, which we all need to take to make our decisions perfect. First is decision to challenge. Second one is decision to consult. We all need to consult. Here, see, in Bhagavad Gita it comes. Bhagavad Gita 2.7. कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः गच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शस्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्. Actually, this is the shloka from where Krishna starts speaking. इसके पहले कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं बोला. Why? Because it is interesting. You see here. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. Here, Arjuna finally surrendered to Krishna and he asked to instruct him. In our life, अगर हमको एक चीज सीखनी है, which is very important, let us learn this. We should never give suggestion to someone until unless he is really looking for it. ऐसा बोलते हैं श्रोता को तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक, सॉरी, वक्ता को जब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक श्रोता सुनने के लिए आतुर ना हो. Because you are here sitting eagerly to listen about Gita, therefore I am able to speak. Otherwise, my speaking will have no value, will have no impact. So that eagerness is very important. So here Arjuna took the decision to consult Krishna, and that was Hare Krishna. And that was his one of the best decision of life. Here, let us see how much we know actually. If this is the knowledge of the whole world, if we, just accommodate in one circle, the very small part of that circle would be what you know, you know. What you know, that you know. And the bigger part than that is what you know that you don't know. And the biggest part of that circle is what you don't know that you don't know. And that is what people don't understand. Yeah. When Prabhupada was here in India, he was preaching the message of Gita, working very hard, struggling very hard. Went to Delhi, went to Jhansi, and tried to preach to the people so that some can help him, some people can help him, and then he can go to the Western countries and then he can preach there. But nobody in India listened to him. कोई सुनता ही नहीं. क्यों? क्या बता रहे हैं स्वामी जी? गीता के बारे में ना. गीता तो हमें बहुत अच्छे से पता है. गीता तो हमारे घर में रखी है. When we go to book distribution, everyone is like, हमारे पास ऑलरेडी गीता. आप पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते नहीं, बट रखी है. अगर मैं अभी यहाँ चेयर छोड़ूं, अगर आपसे किसी से भी बोलूंगा ना, आके यहाँ पे बैठिए, थोड़ा सा भगवान के बारे में बोलिए, सब बोल सकते हैं. That is the thing in India. Everyone
कैन स्पीक अबाउट गॉड एटलीस्ट फॉर हाफ और 1 आवर, कम से कम इतना तो हम सब जानते हैं. Papa said the good thing about Western people, the American people, is that they are intellectual. They accept that they don't know everything, and when someone make them understand something logically, reasonably, they accept that. They are not blindly attached to a particular way of living or to a particular way of non-living. That is a good thing about them. But India, it is very difficult. It is very pious, very auspicious, but at the same time, we have our blind faith, we have our blind rituals. हम किसी को मानने लग जाते हैं, किसी को फॉलो करने लग जाते हैं, किसी को हम पूजनीय मानने लग जाते हैं, विदाउट इवन नोइंग व्हाट दैट पर्सन इज रियली इज. एंड लेटर ऑन पता चलता है कि फेथ की 12 ही बज गई पूरी. देयर आर पीपल. Later on, they try to define rather. हाँ, एंड देन उसके बाद भी डिफेंड करते हैं. Just like cases like Asaram Bapu and others, many people are there in India. Are going in some schools and trying to distribute some cards and like. So many things happen. We need to be very careful to know this, that we don't know everything, but we can know just by approaching the right person. If we can just consult the right person, we can know a lot. How many of us heard this? Experience is the best teacher. All of us, yes. Experience is the best teacher. But the one who has given this quote, he has given a complete quote. This is only the half part of it. ये सिर्फ उसका एक टुकड़ा है. How many of you know the complete quote? किस किस को पूरा quote पता है? Only Raghav Pro remembers it. Chakrita Pro, you also remember? Yes, please tell me. Yes. Experience is the best teacher, but fools can do that. Fools understand by now the smarter things, smarter person to what they listen. What they listen. Yeah, that is there. First class people जो है वो सुन के सीख जाते हैं. Second class people जो देख के सीखता है. Third class जो experience करके सीखता है. But ये quote जो है वो complete क्या है? As Raghav Prabhu said, can you tell loudly? Experience is the best teacher, but the fools understand by no other way. Experience is the best teacher and the fools learn by no other way. That is the full quote. Experience is the best teacher only when we don't hear the right advice of the right people. Am I right? अगर कोई व्यक्ति है, वो बता रहा है कि मैंने शराब पी, तो शराब पीने से मेरे को लीवर में प्रॉब्लम हुई. मैंने तम्बाकू खाया, उससे मुझे कैंसर हुआ. एंड देन उसके बाद भी वी आर लाइक नहीं, मैं एक्सेप्शन हूँ. मैं तम्बाकू खाऊंगा और मुझे कैंसर नहीं होगा. हाँ, मुकेश को हुआ, वो अच्छे से नहीं खाया, ज्यादा खाया. हाँ, या नकली वाला खाया. हाँ, हम अच्छा वाला खाएंगे, हमको नहीं होगा. That is not the way. That is not the science. So therefore, experience is the best teacher only for those who don't understand by any other way. And and therefore, the Vedic process of learning is not experience. The Vedic process of learning is tad vidhi pranipatena pariprashnena seveya updekshanti te jnanam jnanena tattvadarshana. Go to a spiritual master. Krishna says in Gita, 4th chapter, 9th verse, I think. Go to a spiritual master who knows the absolute truth. He can tell you everything. Just go, ask submissively and serve him. Submissively उनसे query करो, प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो. How do we know who is the real teacher? How do we know who is the real teacher? That is also given in the Gita only. 4th chapter की first श्लोक में Krishna is saying, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषो विदु साकालेन महता योगो नष्ट परंतपः. आपके पास गीता है? हैव यू गॉट इट? यहाँ पे आपने अभी नहीं मिला? हाँ, ओके. राघव प्रभु के पास ही, यू कैन टेक इट. सो अगर आप देखेंगे भगवत गीता एज इट इज, आप सबके पास होना चाहिए, क्योंकि कोर्स में अगर आपने एनरोल किया तो आपको मिला होगा. तो उसके इंट्रोडक्शन के पहले ही पूरी गुरु शिष्य परंपरा वहां पे दी गई है. 32 आचार्यों के नाम वहां पे मेंशन है. 32nd आचार्य इज हिज डिवाइन ग्रेस AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who founded ISKCON.
So this parampara, Guru Shishya parampara, unbroken disciplic succession, which is coming directly from Krishna, that is the way to receive the perfect knowledge. Krishna says in Gita. Yes. So वो परंपरा में जो गुरु आ रहे हैं उनके पास जब हम जाते हैं उनसे जब हम सबमिसिवली पूछते हैं we get the perfect knowledge. And that is ISKCON is not just only one authorized organization. There are three other sampradaya also. Shri Sampradaya, Rudra Sampradaya, and Kumar Sampradaya. ISKCON comes in Brahma Sampradaya. That is the, you can say Vedic name of ISKCON. The complete name of ISKCON, Vedic name of ISKCON is Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. That I'll explain in future when we'll go deep into the Gita course, and when this verse will come, then at that time we'll discuss this parampara system. So we need to go to the right person and ask the right question so that we need not to suffer much. तो सफरिंग से बच जाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता सारी चीजें. एंड लाइफ अमेजिंग है. ईदर you will be successful or you will be a example by which people will learn what not to do. So if we don't want to become the other one, then let us learn from the people's experience. Third decision, which is very important, is the decision to connect. Third decision which we all need to take is the decision to connect. What it is the decision to connect? First, let us see from the Gita the verse, then we'll discuss it further. अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितो अस्मि गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव. Arjuna said, "My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt and am prepared to act according to your instructions." Ultimately, whatever we do in our life, we need to first understand why we are doing, what we are ultimately trying to achieve, what is our final destination. Yes, then only we need to take particular decision. Abhi hum sabke exams, most of us have finished our exams na, and then now we are going to go to home. अभी घर जाने वाले हैं ना. अच्छा, घर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक किया होगा आपने. यस. ट्रेन टिकट बुक करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? हाँ, सॉरी, वेबसाइट पे जाना पड़ता है. यस, IRCTC पे जाना पड़ता है. उसके बाद उसका लॉग इन करना पड़ता है ना. लॉग इन करना पड़ता है. फिर लॉग इन करने के बाद डेट डिसाइड करना पड़ता है. एंड देन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. यस. अभी तो ऑनलाइन हो गया ये सब. पहले विंडो पे जाते थे. यस, टिकट लेने के लिए. लेट्स इमेजिन यू गो टू इंदौर विंडो एंड यू से, मैम टिकट दीजिए मेरी ट्रेन छूट रही है. बोले, कहाँ का टिकट? अरे वो सब मत पूछिए, पहले टिकट दीजिए, मेरी ट्रेन छूट रही. अरे भाई, कहाँ का टिकट चाहिए? अरे ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? कहाँ जाना है? गोल क्या है लाइफ का? वाई आर वेस्टिंग माई टाइम? गिव मी टिकट. अरे पागल ही क्या, लाइन से हट भाई, दूसरे को आने दे. अगर तुझे पता ही नहीं है जाना कहाँ है, मैं टिकट दूंगा कैसे या दूंगी कैसे? Knowing the goal of our life, knowing the destination of our life, knowing where we are meant to go, is it waste of time? Decision to connect to Krishna, is it waste of time? Then ultimately, then why we are doing what we are doing? That is the biggest question. Yes, हमें टिकट चाहिए पर जाना कहाँ है ये नहीं पता. How we are, ever going to reach that destination? I hope you all remember that story I shared ना. दो व्यक्ति ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, याद है? One person asked the other one, "Oh my dear friend, where are you going?" He said, "I don't know." तो यार ट्रेन में बैठा है, पता नहीं कहाँ जाना है, ये क्या दिक्कत? So then he asked another question, क्या इतने जल्दी जज नहीं करना चाहिए. Judging someone is not good.
या जजिंग पे एक चीज मैं सच में बोलूंगा, प्लीज डोंट जज by cover or just by seeing something, and even if you have some doubt, ask the question. Otherwise you can completely misjudge the other person, है ना। अभी जस्ट नीचे मैं ये पीपीटी पे थोड़ा वर्क कर रहा था, थोड़ा दिन भर से मेरे को समय नहीं मिल पाया, देयर वर सो मेनी सर्विसेज एंड आई वाज वर्किंग ऑन अ पीपीटी एंड देयर वन स्टूडेंट केम एंड वो गेट के बाहर थे, मैं कार में बैठा था एंड एट दैट टाइम आई वाज सर्चिंग फॉर द पिक्चर ऑफ दैट छोकरी टू पुट इन द to put in the PPT. And Google खुला था and there are so many pictures of girls. So if that person judges by just looking at the window on my screen, so then he can judge anything. Okay, so sir अभी कार में अकेले बैठे हैं, कार के गेट बंद है and he's searching this. Yes, so we can completely misjudge someone by some one or two incidents, therefore we should not do it. It just happened recently, so I was sharing. So you did not judge, he asked another question. So, sir, where are you coming from? He said, I don't know. So naturally he asked the third question. So what are you doing here? Are you a terrorist or what? He said, I don't know. And that is the condition with the 99.99% people in the world. कहाँ जाना है ये भी नहीं पता है, कहाँ से आ रहे हैं ये भी नहीं पता है, कर क्या रहे हैं ये भी नहीं पता। And therefore we should not be like that. And to connect everything to Krishna, one very powerful mantra जो हमको याद रखना है, जैसे हमको हरे कृष्णा महामंत्र हमेशा याद रखना है, वैसे ही चाहिए तो इसको मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लीजिए, डेस्कटॉप की स्क्रीन पे लगा लीजिए, कहीं पर लिख के अपने रूम में 4-5 जगह चिपका लीजिए। डेली कम से कम 10 बार नजर पड़ जाए तो अच्छा है, विदाउट फेल। एंड दिस मंत्रा इज दिस, व्हाट इट इज, कैन एवरीवन रीड विथ मी? डोंट गिव अप, एक साथ पढ़ते हैं चलिए। डोंट गिव अप व्हाट यू वांट द मोस्ट फॉर व्हाट फील्स गुड नाउ। Let us don't give up what we want the most for what feels good now. See, आज भर्ती कल चक्रवर्ती कोई नहीं होता ब्रो। एंड इवन एक पर्टिकुलर डिग्री लेने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। 4 साल आपको निकालने पड़ते हैं बीटेक में, एंड देन एमएससी है तो 2 साल, एमटेक है तो 2 साल, पीएचडी है तो 5 साल। हाँ, समटाइम इससे भी ज्यादा चला जाता है। सो मच टाइम वी नीड टू गिव टू जस्ट अचीव वन लिटिल गोल ऑफ दिस लाइफ, and we are planning to achieve the highest goal, the perfect goal of human life. So let us not give up in between, because there are so many temptations, there are so many distractions, so many things will come, so many people will come, so many proposals will come, and they will also give you very good feeling. Those temporary goals, those temporary people, those temporary things in life, they will give us a bliss which we are looking for some time. Am I right? कुछ समय के लिए लगता है ना, जब कोई व्यक्ति लाइफ में आ जाता है या कोई थिंग हमारे लाइफ में आ जाती है, हाँ, या कोई पर्टिकुलर चीज जो हम अचीव करना चाहते हैं, हम अचीव कर लेते हैं, वी फॉरगेट एवरीथिंग, यू नो। उस समय हम सब भूल जाते हैं। अभी हम घर जाने वाले हैं, डेफिनेटली बिलीव मी, मेनी मेनी थिंग्स आर गोइंग टू कम, यू नो। सेशंस के मैसेज डले रहेंगे, कॉल्स आए होंगे, बट वी आर गोइंग टू हैव so many things to do. And at that time, that decision to take, what really I want in my life, what really matters for me, am I going to opt for that, or am I just going to go with the feel good life, which does not feel so good at all? Yes, so it's very important. When Arjuna asked Krishna this question, why it happens in the world that people do wrong things even if they know that it is wrong, उनको पता है ये गलत है तब भी गलत कर बैठते हैं। पता है गेम्स खेलूंगा टाइम वेस्ट हो रहा है, कॉन्शियसनेस खराब हो रही है, तब भी खेलते हैं। पता है कुछ एडल्ट कंटेंट देखा तो सब खराब हो जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू सी anything with the right consciousness, still we are not able to help ourselves. We know that if I don't study, my result will not be good. Still we are not able to study. There's so many things, which we know that it is right, but we are not able to do that. Why? And we know such things are wrong, some things are wrong, still we are not able to control ourselves. हाँ, that is the exact question Arjuna asked. क्यों ऐसा होता है? ऐसा लगता है लोगों को पाप करना नहीं चाहते, उनसे जबरदस्ती कराया जा रहा है।
At that time, Krishna says, काम एषा क्रोधेशा रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधियेनम इह वैरिणम काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भव. It is just because of material desires, because we all have so much strong this tendency to enjoy material life. We are not able to do which is right. Many times it happens. Okay, so we need to safeguard ourselves from that, and we need to practice what is right. You know, आप सब लोग के लिए आई फील रियली, मतलब आईआईटी में आके भी यू आर नॉट बीइंग सो मच डिस्ट्रैक्टेड, स्टिल यू हैव सो मच आईआईटी, एंड आपके माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए दैट यू आर नो गोइंग अगेंस्ट द फ्लो. To connect to Krishna in this age, it's not so easy. It is really going against the flow. You know, people are going for parties, people are going for what not, everything. And at that time, you are saying, I'm going for Gita session. अगर आप रूम में माला करते हो, दोस्त आ गया, भाई क्या कर रहा है भाई, व्हाट आर यू डूइंग, पागल हो गया क्या? हाँ, sometimes they react like that. So it is just like going against the flow, completely against the flow. अभी जस्ट आज सुबह ही मैं ट्रेन में आ रहा था, एंड आई वाज चैंटिंग इन द मॉर्निंग. वी नीड टू चैंट, बट ट्रेन 9 बजे तक पहुंचना थी, तो आई वाज चैंटिंग इन द ट्रेन. People outside they commit all kind of sin openly, and to chant Krishna's name, we feel shy. Are we doing something wrong? Are we doing something wrong? बाहर कैंपस में लोग, लड़का लड़की, एवरीवन फील्स लाइक इट इज ओके, यू नो. क्लास में भी वो साथ में बैठते हैं, आजू बाजू में बात करते हैं, एवरीवन इज लाइक नेग्लेक्टिंग, कोई दिक्कत नहीं. एंड हम तिलक लगा के आ जाए बड़ा सा, या हम माला लेके चले जाए क्लास में, वी आर लाइक एलियन. व्हाट? Okay, we should follow the etiquette of the classrooms. I'm not saying you need to do that. I'm just saying that we should not feel, doing the right thing. We should not feel fearful. And that there comes the shloka, remember Krishna and fight. So therefore, what we need to do? Tasmat sarveshu kaleshu mamanusmaran yuddha cha mai arpita mano buddhir mam eveshasi asamshaya. Here Krishna is insisting, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your pursuit of fighting. As simple as that. You know, किसी को वो नहीं बना है, वो दैट कुंभ मेला में आईआईटी बाबा वाज वेरी फेमस, नहीं? उसके कारण माता पिताजी बहुत डर गए, और है ना, अभी आप बताते हो तो वो डर जाते हैं, और अरे वो इतना फेमस हो गया, वो आईआईटी में हमारा बच्चा भी है, ये भी जाके बाबा ना बन जाए. नो, द रियल गीता डज नॉट टीचेस दैट. रियल गीता इज, कृष्ण इज सेइंग यू शुड फर्स्ट थिंक अबाउट मी, chant in the morning, read Gita. Morning time is for spiritual activity, day time is for your studies, evening time is for rest. Live life like this, your life will be best. That is a simple formula. सूर्य के हिसाब से हमारी लाइफ चलती है अगर, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तीनों एस्पेक्ट में विल बी वेरी मच हेल्दी. Yes, the many devotees who have accepted this lifestyle are experiencing that change. Last decision which all need to take is this one. The decision to be courageous. To be courageous. 18.66. Krishna is instructing Arjuna. That is the most famous verse of Gita. Actually ये श्लोक आता है, आप देखेंगे जो वर्स हमने डिस्कस किया था ना, where Krishna is saying in the beginning, where we discussed that Krishna was saying, you do whatever you want to do. It is ओके, मैं को escape नहीं दबाना था वैसे, ठीक है, दबा दिया तो. It is this one, 18.63. I don't know, sharing हो रहा है here. Sorry, 18.63 here.
Krishna said, do what you wish to do. जो करना चाहो वो करो. एंड देन नाउ हियर अगेन उसके बाद भी वर्सेस बोले गए हैं कृष्ण के द्वारा. 63 के बाद 64 में कृष्णा सेज, बिकॉज यू आर माई डियर फ्रेंड, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तो मैं तुम्हारे लिए इजी कर देता हूँ. क्यों? क्योंकि अभी इतना बैठ के सोचोगे, इतना हैवी नॉलेज गीता का, जीवन भी बीत जाएगा, उसके बाद भी पता नहीं कंक्लूजन पे आ पाओगे कि नहीं. हाँ, सो लेट मी हेल्प यू, लेट मी टेल यू द कंक्लूजन, लेट मी टेल यू द कॉल ऑफ एक्शन, कि तुमको अब करना क्या है. So in 64 he says that because you are my dear friend, therefore I am instructing you what to do now. 65 he says, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो माम एवेश सत्यम ते प्रतिजानि प्रियोसी में. You do my bhakti, you first of all you think always about me, but it is difficult. So then he said, do my bhakti, hear and chant about me, spare some time out and hear and chant about me. Then worship me and bow down unto me. In this way, you will come to me without fail. For sure, you will come to me. And then in the next verse, he is saying this. Please repeat after me. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shucha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. डरो मत. ये जो वर्ड है ना लास्ट, माँ शुचः, डोंट fear, don't be fearful. As I said, when we practice spiritual life, we are going against the flow. So we need a lot of strength. Not for just that, for any decision which we take in life, we need a lot of strength. Many times we take decisions out of fear. How many of us have taken decisions out of fear? कोई ना कोई डिसीजन हमने लाइफ में लिया डर के कारण. हम सब ने ना. यस. कुछ ना कुछ हम ऐसा डिसीजन ले लेते हैं डर के कारण. नॉट बिकॉज आई वांट इट, बिकॉज आई फियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट टेकिंग दिस डिसीजन, और टेकिंग दैट पर्टिकुलर डिसीजन. हम डरते हैं एंड डर के कारण हम वो कर लेते हैं जो हम समाव कभी कभी शायद नहीं भी करना चाहते थे. या एंड देयरफॉर एक फॉर्मूला जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, विच ऑल्सो हेल्प मी अलॉट व्हेन आई हर्ड इट फ्रॉम वन ऑफ द सीनियर डिवोटी. Do not be fearful of taking the right decision by thinking what can go wrong. Listen carefully. Do not be fearful of taking the right decision by thinking of what can go wrong, but be excited by feeling what can go right. Right? Just what we discussed till now, although I have presented with so much of logic and reason, if just somehow or other, if we practice nicely and if we make our life successful, and that success would be eternal life, full of bliss, full of knowledge. I give this little task. If you want to take, just think about it. These three things: eternity, bliss and knowledge, uninterrupted, what it means, what it is beyond birth, death, old age and disease, what it means. We should give some time, how big this goal is. And then if we really take this, bring this courage and take this right decision without being fearful, to keep going, keep progressing, keep doing what is right, neglecting our feel good decisions, neglecting the words of the people around us, neglecting the words of, you know, even so-called well-wishers. Sometimes it happens, in the form of well-wishers, these words will come. Don't do this, at least for now. अभी के लिए ऐसा ही नहीं है, बाद में कर लेना. Like that it will happen, they will say. And if we get fear, oh, अगर मेरा ज्यादा समय चला गया इधर,
तो मेरी पढ़ाई में गड़बड़ हो गई, तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो हाँ, अगर एट लास्ट मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी, तो इफ आई गिव टू मच टाइम इन स्पिरिचुअल लाइफ, इट इज अ बिग मिसकंसेप्शन, यू नो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा, टू एंड विथ, बट जस्ट दिस इज जस्ट लाइट लास्ट स्लाइड आई थिंक। आईआईटी मद्रास में एक डिवोटी है, माधव नाम है उनका, ही वाज ए स्टूडेंट। आज से 4 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उनके एक दोस्त थे हर्ष करके, ही वॉज he got selected in JEC, and his friend went to IIT. So Harsh came to the program, and उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने अपने दोस्त को भी रिकमेंड किया, एंड माधव यूज टू अटेंड इट ऑनलाइन फ्रॉम IIT मद्रास। सो जो शुरू का 6 सेशन कोर्स होता है ना, he attended that complete course, and after that he started chanting, and he asked me, Prabhuji, is there any ISKCON center or ISKCON activity going on in IIT Madras? Because for sure something should be going on there. You find it out, you'll get it. And he started searching for it, and by the mercy of Krishna, he got it. And not just that, वहां पे एक full fledged base चल रहा था. You know, base system क्या होता है actually? Like there are hostels. Similarly, Prabhupada gave a concept of a spiritual hostel, a place where like-minded people live together. They wake up early in the morning, do their sadhana, do their practices, understand and study some scriptures, and then by 8 o'clock they start their studies and the life of a student. And in the evening they come back, they sleep on time. Like that, they live very happily, eating Krishna Prasad, not eating such food which is taste maybe, or also consciousness wise is not so good. But अभी तो मजबूरी है, तो कुछ कर नहीं सकते. So that is a concept of a base. So he went to the base, he liked it very much, and he started spending more time in the base, not neglecting his studies. He was doing his studies and started spending more time in the base. Gradually, just by the end of 1 year, first year, he came to the level of chanting 16 rounds. Ideally, that should happen. Maximum by 1 year, we should reach that level, because it is not so difficult. If we are just hearing nicely, studying nicely, understanding the concept, we can easily come. Because that is not something burden. That is a bliss. Yes. So he came to the standard of chanting 16 rounds, started living in the base only. Although hostels compulsory होते हैं सारे IITs में, but still, वहां पे फीस देते हुए भी he was living in the base. नाइट में वहीं रुकते थे, मॉर्निंग में साधना करते थे, स्कूल में दिन भर, कॉलेज में दिन भर बिताते थे. ऑल्दो घर वाले भी उतने थोड़े फेवरेबल नहीं थे, तो घर वालों को ज्यादा एक्टिविटीज नहीं बताए. इवन समटाइम्स ही हाइड फ्रॉम हिज पेरेंट्स दैट आई एम गोइंग टू सम कैंप. मोरली स्पीकिंग आपको लगेगा कि ये गलत है, बिकॉज पेरेंट्स नहीं अंडरस्टैंड कर सकते. समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है, क्योंकि उनने ये सब तो नहीं सुना है. उनका कॉन्सेप्ट यही है, भक्ति मतलब IIT बाबा. सो देयरफॉर वो डर जाते हैं. तो उनको उतना ही बताना चाहिए जितना वो एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो घर पे वो थोड़ा हिडन वे में प्रैक्टिस करते थे, एंड यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करते थे. ही डिड इट फॉर द 4 years. ऑल्दो मैं चाह रहा था उसमें पुट करना, मेरे पास समय नहीं मिला. सो लेट मी show you his message after completing his BTech. What was his message? Can someone come? Raghav, yes. This is a message he sent me on 22nd March 2025. After this, we had a talk. You can read it loud. हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्ते इमोजी. Emoji छोड़ दो, just text. आई एम बैक चैटिंग. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. थोड़ा loud दी, सबको जाने. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. All glory to Srila Prabhupada. By the mercy of Hari, Guru and Vaishnavas, I got All India rank 10th in GATE 2025. Please pray for me that may I become a more humble, submissive and surrendered sadhak, and surrender in my sadhana, and use my this achievement to Krishna's and my Guru's glorification, Krishna's service by preaching or anything which ultimately please Hari, Guru and Vaishnavas. YAS, your servant. Hare Krishna. I hope you understood. So he got AIR 10 in GATE, and can you see he wrote the message? Don't we need such people?
Don't we need such kind of people who are such having such humble, submissive service attitude, and also have the best material positions जो कि success consider किया जाता है world में. We need both, bro. We need both. So I request all of you, be best in your things. जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आप आगे करने जा रहे हैं, उसे बिल्कुल बेस्ट तरीके से करिए. अर्जुना was not an ordinary warrior. He was the best of the archers. Krishna selected Arjuna to speak Gita. He was the best of the archers, but he was completely surrendered to Krishna. We need both, intelligence and a heart. The combination of both is very deadly. That can create revolution in the society. If just such people, a group of people भी अगर ऐसा हो जाए, Prabhupada said if 10% people in the world, if they can become Krishna conscious, the whole world will become peaceful. No wars will be there in the world. Prabhupada said it. Just अभी तो Indo-Pak war भी start हो गया. Yes, so Prabhupada was fearless, and we also need to become fearless. एक बार एक डिवोटी ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो प्रभुपाद बोले कि वहां पे माउंटेन था अमेरिका में. He said, in my childhood I used to climb such high mountain alone. So they said, oh Prabhupada, you must be very fearless then. आप बहुत fearless हो गए तब. Prabhupada said, I was fearless then and I am fearless now. Otherwise, how I can come to your country alone, only with 40 rupees, having no help, having no resources to preach the message of Krishna. And therefore, I request all of you, you all should also be fearless. Just have faith on Krishna and just keep going in your life. Okay? So these are the 4 decisions which we need to take if we really want to take perfect decisions in our life, and then our destiny would be as perfect as we can imagine. Thank you very much. Hare Krishna. Okay, so I end it here. 7:45 हो गया, although we started late. I need 1 hour for the session generally. So anyone has any question? You can take 1 or 2 questions. Any questions? Yeah. I have one. Yeah. It is something good for the but feels right now. But it feels good right now. And what you want the most for what feels good now. But over the last minute but it feels good right now. सोच सकते हैं कि मतलब मोस्टली ऐसा लोग बोलते हैं अगर वाले बोलते हैं फ्यूचर में जो अच्छा इसके अकॉर्डिंग इस अभी जो मतलब अभी के लिए जो अच्छा लगता है अगर ऐसे तो वही बोल रहा था. अगर वो कोच का मुझे थोड़ा इस बार एक कोच में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है अभी के लिए अगर सोच सकते हैं अभी जो अच्छा लग रहा है उस हिसाब से not saying that what you whatever things do now. Sir? Okay, I was doing wrong. No, maybe you understood wrong. I can show it again. Yes. Yes. So it is, don't give most अच्छा फॉर्मूला लगाना चाहिए. एक सेकंड. Let me put it right away so that so okay, now I think रुकिए. फ्यूचर जो एक्चुअल में चाहता हूँ उसको Anirudh Pro, thank you. Let me show you the book. Okay. Sorry? No signal. Please, No signal यहाँ तो आ रहा है, तो यहाँ पे बंद हो गया. मुझे लगा आप मेरे से बोल रहे हो सर. थैंक यू फॉर आस्किंग. अगर वो क्लेरिफाई नहीं होता तो बहुत गलत मैसेज चला जाता. एग्जैक्ट ऑपोजिट मैसेज चला जाता. यार ये no, not like that. Just 1 second. हाँ, so grammatical errors should be avoided, otherwise मैसेज जो है वो गलत कन्वे भी हो सकता है.
English is more dangerous than keyboard. Yes, sir. नहीं यार ये क्या हो रहा है पता नहीं, अभी आ रहा है सही. ओके, सो नाउ इट्स गुड ना. डोंट गिव अप. ओह सॉरी, यू टू गो. So you can take prasadam please inside. You can eat it. Just as we are also ending just after one or two announcements. So don't give up what you want the most for what feels good now. ऐस वो चीज पे गिव अप मत करो जो आप सच में अपने लाइफ में चाहते हो, उन चीजों के लिए जो अभी अच्छी लग रही है, जो अभी मजा दे रही है. दैट वाज द मीनिंग, है ना. आई होप इट इज क्लियर. थैंक यू. सो या सो दिस इज क्विक अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन. कल हम कैंप में जा रहे हैं. वी आर गोइंग फॉर वन डे उज्जैन कैंप. हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग? So can you please raise the hand? Ankit bro, you are also coming? Oh, क्या हो गया? Oh, we'll discuss it personally. You gave me a shock. Okay, rest. How many of us are coming? Can you please raise hand properly? Okay. प्रजय प्रभु चिराग प्रभु का टिकट हो गया है. ऋषि प्रभु का वर्क है. अपने चक्रधर प्रभु का भी टिकट है. वैभव प्रभु आपका भी वर्क है. यस, विक्रम प्रभु का भी टिकट है. सो एक्चुअली यू नो नेक्स्ट टाइम ना, नेक्स्ट सेमेस्टर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सेमेस्टर बिगिन होने पे मैं कैंप अनाउंस कर दूं. आप लोगों को टिकट बुक करने के लिए यू विल हैव लाइक सफिशिएंट टाइम कि आप कैंप के बाद ही करें, ताकि ये मिस ना हो. इट्स अ रियली ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू गेट अ पुश इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ. सो हुएवर कैन कम, अभी जो भी आ सकते हैं. आई अंडरस्टैंड, मैं सबसे ऑलरेडी पर्सनली बात कर ली है, बट कुलदीप प्रभु इफ यू कैन कम. यस. हाँ, कॉपीज चेक करने. ओ सो इफ एनी वन ऑफ यू कैन कम. सो आई नो वैसे सबके बारे में मुश्किल ही है अभी. सो बहुत अच्छा लगता, बट अभी 10 to 12 devotees are coming for the camp. 12 devotees something. We'll have a good experience there. And apart from that, just keep chanting, keep remembering Krishna. I'll share our future plan. कितने सेशंस हम करेंगे वीक में. What do you suggest? How many sessions would be okay per week? I'm planning for 3 actually. 3 would be good. या क्योंकि घर में बहुत समय रहने वाला है, आपका समय बहुत वेस्ट हो जाएगा, इसलिए 3 सेशंस पर वीक वी कैन डू. एंड रिमेनिंग डेज जो है ना, उसमें भी आई एम प्लानिंग हाफ एन आवर बुक रीडिंग डिस्कशन. सो ऑनलाइन ओनली. मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आई विल कम हियर वंस इन अ वीक ओनली. एवरीथिंग एल्स विल बी हैपनिंग ऑनलाइन. सो बुक रीडिंग डिस्कशन विल हैव लाइक हाफ एन आवर. विल रीड अ बुक. उसमें एक एक डिवोटी एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे एंड देन उसको एक्सप्लेन भी करेंगे. एंड उसमें एक्सप्लेनेशन में उनको जो समझ में नहीं आएगा दे कैन आस्क, एंड देन वो क्लैरिफिकेशन होते होते बहुत अच्छे से हम लर्न करते हुए आगे बढ़ सकते हैं. ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू हैव अ मॉर्निंग चैंटिंग सेशन. इन दैट इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको इतनी टाइम पे आना है. एज पर द नंबर ऑफ राउंड्स यू आर चैंटिंग, यू कैन ज्वाइन इन बिटवीन द सेशन. वो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट रहेगा. लेट्स से मॉर्निंग में 6 to 7:30. सो 6 बजे से 7:30 के बीच में आप कभी भी ज्वाइन करके सबके साथ मॉर्निंग में यू कैन चैंट 1 राउंड और 2 राउंड, जो भी आप चैंट कर रहे हैं, 4 राउंड 6 राउंड, वट एवर नंबर ऑफ राउंड यू आर चैंटिंग. उससे हुआ क्या, कली काल में संग में शक्ति है. इधर फिजिकली और वर्चुअली लेट अस बी टुगेदर. अकेले कभी कभी एंथुजियाज्म डाउन हो जाता है. बट व्हेन वी सी ओ प्रभु इज चैंटिंग, एंड कभी कभी ऐसा होता है, आप देखेंगे ना, जब इवन वर्चुअली भी, फिजिकली तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है, बट अगर वर्चुअली भी आप देखेंगे, लेट्स से यू आर चैंटिंग एंड योर माइंड इज गोइंग हियर एंड देयर एंड यू सी इन द स्क्रीन समवन इज चैंटिंग वेरी इंटेंसली. He's chanting like Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram. Although facial expression से we cannot judge कि intensely है कि not, but still he's trying to focus ना. So वो देख के फिर हमको भी इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं, मेरे को भी अच्छे से चैंट करना है. That is our main process. So let us chant. Parents might not allow to wake up early in the vacation. मतलब माता जी बोलते हैं कि छुट्टियों में अलार्म मत लगा, और हमारी आदत भी नहीं हुई है जल्दी उठने की. So you take the decision based on these 4 decisions. ठीक है. क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप इधर से ले. So therefore I told you this. अभी घर में जाके आपको जो भी बोलेंगे तो पहले ये 4 चीजों के बारे में सोचना.
ठीक है। एंड देन उसके बाद इन चारों को अप्लाई करने के बाद देन यू टेक अ डिसीजन। ओके। एंड यू कैन, उसमें एक वो भी है ना कंसल्ट वाला। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। हर बार मैं भूल जा रहा था। सॉरी फॉर टेकिंग वन फ्यू मोर मिनट्स। ये एक्चुअली है क्या, श्रेष्ठास क्लब अभी बन रहा है। वी आर मेकिंग वन क्लब इन आईआईटी, जो कि स्टूडेंट्स ही चलाएंगे, आप लोग ही चलाएंगे उसको। विल बी देयर इन द बैक एंड टू गाइड यू, टू हेल्प यू, सो दैट मेनी मोर स्टूडेंट्स कैन बी कनेक्टेड, जो कि डायरेक्टली गीता नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, या जो डायरेक्टली ये जो हमारे एक्टिविटीज हैं उसको प्रमोट होने में प्रॉब्लम आती है, तो वो इस क्लब के थ्रू हो जाएगा। सो इसमें अभी करंटली वी हैव 41 मेंबर्स। गुड नंबर इज देयर। सो जिन भी डिवोटीज ने अभी इसमें अपना डिटेल्स फिल नहीं किए, यू कैन फिल इट। कुछ नहीं करना है आपको, बस डिटेल फिल करना है एंड यू विल गेट एडेड इन वन व्हाट्सएप ग्रुप। दैट्स ऑल। You are already participating in the activities. You'll add it in the group. You will be recognized as one of the member of the Shishta Club. Unofficially, it has been announced by the Gymkhana. Official, it will become in the next semester in the next Senate meeting. So they said just you show us how many club members जो हैं वो increase हुए हैं, आपके क्या क्या activities आपने की है last semester में, वो सब का आप एक PPT बना के हमको दिखा देना and we'll make it official. So by the mercy of Krishna, by the help of all of you, for sure we can become official in the next year, and then both way we can do this, we can take this mission forward. Thank you very much. Hare Krishna. Okay.